Good morning, students. So, today is the topic of fuse. So, types of fuse, what is meant by fuse? So, fuse means a fuse is a safety device used for the purpose of protecting a circuit against excessive current. Okay, fuse means what? It is a safety device. Okay, तो एक्सेसिव करंट फॉल्ट होने के बाद जो एक्सेसिव करंट फ्लो होता है, ओके, सो प्रोटेक्ट दैट एक्सेसिव करंट or short circuit current, okay, and overload condition, the fuse is safety devices use. In the event of excessive current, the fuse element melts and opens up the circuit, thereby protecting it from damage. Okay, फॉर एक्सेसिव करंट होने के बाद, एक्सेसिव करंट फ्लो होने के बाद द फ्यूज एलिमेंट मेल्ट्स, फ्यूज एलिमेंट मीन्स फ्यूज वायर विल मेल्ट एंड opens up the circuit, and it will open the circuit, thereby protecting it from damage. Okay, जो आगे का सर्किट कनेक्टेड है, ओके, इफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दैट, सपोज एग्जांपल हीटर, गीजर और फिर लैम्प, फैन, ट्यूबलाइट, any electrical appliances or any electrical load, it will protect from damage. Fuses open the circuit. Fuses open the circuit to prevent high current caused by short circuit from causing damage. मीन्स शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने के बाद जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने वाला है, ओके, तो एक्सेसिव अमाउंट करंट फ्लो होने के बाद एक्सेसिव हीट विल बी डेवलप, ओके, दैट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल विल also increase. Okay, so fuse open the circuit to prevent high current. To prevent that high current, fuse opens the circuit by short circuit from causing damage. So this is called a fuse. A fuse therefore has to do three things. It has to know or sense when a short circuit exists. Means short circuit fault exists होने के बाद it has to be sense or to know और सेंस व्हेन अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एग्जिस्ट. शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एग्जिस्ट होने के बाद फ्यूज़ क्या करता है? सेंस करता है. इट हैज़ टू ओपन द सर्किट बिफोर एनी डैमेज इज डन. ओके, मीन्स डैमेज होने के जो फॉल्ट करंट है, एक्सेसिव करंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और लोड में से फ्लो होकर डैमेज होने वाला है, तो it has to open, means it will cut off the supply or disconnect the supply, and it has to open the circuit before any damage is done. It has to have no effect on circuit during normal operation, that is when no short circuit exists. It has to no effect. Okay, no effect on the circuit during normal operation. If normal operation or normal rated current will flow, it has no effect, means fuse element having a no effect, fuse having a no effect during normal operation, that is when no short circuit exist. Okay, means short circuit नहीं exist, short circuit develop नहीं होता है तब. Next, fuse. When a short circuit occurs, the current flowing through the fuse increase greatly. Short circuit fault होने के बाद current flowing through the fuse increases greatly. This is causes the heating of fuse element to increase. So this is the cause to heating of the element of fuse wire or fuse element to increase. The fuse element has a low melting point. Okay, fuse element or fuse wire having a low melting point, this is the characteristics of fuse element, which means that it melts at a lower temperature than ordinary wire conductors. Means that fuse element and fuse wire having a low melting point, low temperature coefficient, that means at a lower temperature than ordinary wire conductors, lower temperature coefficient than ordinary wire or conductors. When the heat caused by short circuited current, when heat caused by short circuited current reaches melting point of the fuse element, the element melts and opens the circuit. हीट डेवलप होने के बाद, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने के बाद जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट विल बी डेवलप्ड, that reaches the melting point of fuse element. Okay, means fuse element or fuse wire will be melt, the element melts and open the circuit. Okay, means fuse wire क्या होता है? Melt होता है and circuit opens, means it will disconnect the supply from, it will disconnect the supply or shut off the power supply. Fuse installation of fuse. The fuses are always connected into live wires. Live wires और phase wires में हम fuse क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं L1 L2 L3 for 3 phase L1 L2 L3
that is RYP phases, and never into the neutral, means neutral में हम फ्यूज कनेक्ट नहीं करते, और द प्रोटेक्टिव अर्थ लाइन इन P, ओके, मीन्स प्रोटेक्टिव अर्थ लाइन जो अर्थ वायर है उसमें भी हम फ्यूज कनेक्ट करते नहीं है, ओनली कनेक्टेड इनटू अ लाइव वायर दैट इज फेज वायर. The materials which can be used in fuse wire, okay, तो fuse wire में जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन से है? फ्यूज वायर मटेरियल्स आर दी टिन, लेड, जिंक, सिल्वर, एंटीमनी, कॉपर और एल्यूमिनियम. मोस्टली कॉपर और एल्यूमिनियम, सिल्वर, antimony, tin, lead, zinc are the material used for a fuse element or fuse wire. Next, types of fuses. In that, first is rewirable type and next is cartridge type. So first is rewirable type fuse. Rewirable fuse means the name itself indicates a रिप्लेसमेंट ऑफ वायर, मीन्स जो फॉल्ट होता है तो फॉल्ट होने के बाद जो फ्यूज़ वायर और फ्यूज़ एलिमेंट मेल्ट होता है तो हमें मैन्युअली उसे क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है. सो दैट फ्यूज़ इज कॉल्ड एज अ रिवायरेबल टाइप. द फ्यूज़ एलिमेंट इन दिस टाइप the fuse element in this type of fuse consist of a wire which may be replaced when necessary. okay, तो फॉल्ट होने के बाद जो एक्सेसिव अमाउंट करंट फ्लो होता है थ्रू दैट द फ्यूज एलिमेंट और फ्यूज वायर विल बी मेल्ट एंड दैट विल बी रिप्लेस. These fuses are simple in construction and initial cost as well as the renewal cost is very low. ये fuses का cost ये fuses simple in construction है and इसका cost भी low है. The fuse elements used in this type are tin, copper, wire and lead, tin and alloy. The fuse element or fuse wire material is used in this type are tin, copper wire, lead, tin, alloy, etc. Approximate size of fuse element of tin, copper wire or aluminum wire for use in semi-enclosed fuses. The approximate size of fuse element or of tin, copper wire or aluminum wire for use in semi-enclosed type fuse. In that figure shows that, okay, this is a base and next is fuse wire. That fuse wire is connected in this figure shows that, okay, यहाँ पे दिखा है फ्यूज कैरियर और फ्यूज एलिमेंट फ्यूज वायर कनेक्ट किया है. दिस इज अ फ्यूज होल्डर. ओके, तो ये जो कॉन्टैक्ट्स है थ्रू दिस कॉन्टैक्ट्स वी हैव टू कनेक्ट द फ्यूज वायर एंड फ्यूज एलिमेंट हमने कनेक्ट किया है. ओके, तो ये वायर फ्यूज वायर और फ्यूज एलिमेंट हम मेल्ट होने के बाद रिप्लेस कर सकते हैं. दैट टाइप ऑफ फ्यूज कॉल्ड एज अ रिवायरेबल फ्यूज. ये फ्यूज होल्डर है, मीन्स फ्यूज कैरियर, फ्यूज बेस. ओके, नेक्स्ट fuse. The fuse element will melt after approximately 2 minutes when carrying a current equal to twice of the current rating. Okay, means जो rated current है suppose 5 ampere है, in the twice of current rating will be flow from the fuse, it will melt after 2 minutes approximately. However, the cutoff time factor varies in revariable fuses due to the cutoff time factor varies in revariable fuses due to the construction of carrier. Okay, so cutoff time or supply disconnect of time is means quickly melt होना या फिर quickly disconnect होना supply due to the construction of carrier, the manner in which fuse was in service. Okay, which means the fuse कैसा service में है connect किया है. Okay, the manner in which the fuse was in service, length of time the fuse was in service, ambient temperature, the amount of current, etc. So that amount of current, etc., excessive amount of current means the operating time will also large. Okay, the amount of current, etc. Next, fuse disadvantages of rewirable type fuse are the deterioration of the fuse element by oxidation due to heating. Okay, oxidation due to heating means excessive amount of heat will be flow, then it will comes in contact with the moisture, dust, dirt. So यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्रिएट होता है. सो डिटीरियोरेशन ऑफ द फ्यूज एलिमेंट. ओके, फ्यूज एलिमेंट क्या होता है, डैमेज होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन effect by the fluctuation of ambient temperature. Okay, means temperature effect will also depend on the fuse element wire melt or fuse element will cut off the supply or disconnect the supply. Next, low speed operation, external flash or arc on blowing.
एक्सटर्नल फ्लैश हुआ या फिर आर्क जनरेट हुआ, स्पार्क हुआ ऑन ब्लोइंग, पुअर रप्चरिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट, रॉन्ग रेटिंग पॉसिबल बाय ह्यूमन एरर. ओके, wrong rating specifications of fuses are connected by through human error. This is human error. Next type of fuse is cartridge fuse. So cartridge fuses are developed to overcome the disadvantages of revariable fuse. That type of disadvantages of revariable fuses are overcome due to cartridge fuses. As cartridge fuse elements are enclosed in an airtight chamber, deterioration does not take place. यहाँ पे डिटेरियोरेशन नहीं होता बिकॉज ऑफ ये enclosed chamber airtight chamber यहाँ पे यूज़ किया है. Further, the rating of cartridge fuse could be accurately determined from its marking. However, the cost of replacement of cartridge fuses is more than revariable fuses. The replacement cost of cartridge fuses is more than revariable fuse because revariable fuse construction is simple as compared to cartridge fuses. So यहाँ पे फिगर में दिख रहा है cartridge fuses. In that glass material is used for the airtight chamber, cartridge type with glass tube and wire fuse link. In that two contacts से या फिर टू जो ये है एंड्स है, तो यहाँ पे वन एंड एंड टू एंड. सो इन द टू एंड हमने क्या किया है, फ्यूज वायर कनेक्ट किया है. फाइबर ट्यूब, रिबन टाइप, copper fuse link. Next, schematic symbols of fuse, plug type with ribbon fuse link. Next, knife blade cartridge type. So this next, cartridge fuses are classified against two, in that low rupturing capacity and high rupturing capacity. In that, fuse rupturing capacity is the ability of fuse to open the faulty circuit without much arcing or damage to itself. रप्चरिंग कैपेसिटी मीन्स क्या है, मीन्स फॉल्ट होने के बाद जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, तो फ्यूज़ क्विकली क्या होना, ब्रेक होना या फिर डैमेज होना, फ्यूज़ वायर मेल्ट होना विदाउट एनी आर्किंग. मीन्स वहाँ पे कोई भी आर्क प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए या फिर स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. सो दैट टाइप ऑफ कैपेसिटी इज कॉल्ड एज अ रप्चरिंग कैपेसिटी. For domestic installations, low rupturing capacity fuses are used, whereas for power factory installations, installations connected from high power source, that is high rupturing capacity. Industrial applications, commercial applications used as a high rupturing capacity, and for domestic appliances, that is residential, low rupturing capacity fuses are used. Next is fuses. Low rupturing capacity cartridge fuses can further divided into two types: ferrule contact cartridge fuses, diced screw type cartridge fuses. In that, fuse ferrule contact cartridge fuses. This type of fuse is used for this type of fuse used for protecting electrical and electronic circuit. These are available 25, 50, 100, 200, 250, 500 milliampere, and also in 1, 2, 6, 5, 6, 10, 16 and 32 ampere capacity. So this type of fuses are available in that range 1, 2, 5, 6, 10, 16, 32 ampere capacity. Normally the current rating is written on one side of the cap. ओके, जो टू कैप्स है फ्यूज़ के ऊपर, ओके, तो वन साइड कैप वहाँ पे रेटिंग नोट डाउन किया जाता है. एंड वाइल रिप्लेसिंग द सेम कैपेसिटी फ्यूजेस शुड बी यूज. तो मेल्ट होने के बाद सेम कैपेसिटी टाइप ऑफ फ्यूज़ क्या हमें रिप्लेस करना पड़ता है. Its body made up of glass. Fuse wire is connected between two metallic cap. So the cartridge type of fuses body is glass type and between two metallic cap or two ends. This fuse can be plugged into the socket. It can be fitted into fuse base with a screw in a fuse holder. Okay, तो ये फ्यूज़ हम क्या करते हैं, सॉकेट पर प्लग करते हैं या फिर सेट करते हैं with the help of
fuse base with screw in a fuse holder. Next is fuse LRC, that is low rupturing capacity fuse. 1 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 2 ampere, 7 ampere, 10 ampere, 13 ampere. यहाँ पे दिख रहा है 2 मेटेलिक कैप्स है. इन दैट फ्यूज वायर एंड फ्यूज एलिमेंट विल बी कनेक्टेड. एंड ये फ्यूज हम कैसे कनेक्ट करते हैं? फ्यूज होल्डर, थ्रू फ्यूज होल्डर एंड स्क्रू. नेक्स्ट फ्यूज dies screw type cartridge fuses. It is also not a rewirable type of fuse. This type of fuse is commonly used in domestic and industrial electrical installations in many countries. It consists of following parts: screw cap or fuse cartridge holder, fuse cartridge, fitting screw or contact screw, protective plastic or ceramic ring, fuse base or fuse socket. See, in that figure shows that cartridge type of fuse element, सिलिका, पोर्सलिन. यहाँ पे फ्यूज वायर दिखाए, देखो यहाँ पे फ्यूज है. हाँ, so these are the two metallic caps in that fuse element, and in that silica element is used. Silica is used. Next, fuse cartridges are available for rated electric current of 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 and 63 ampere. To prevent the insertion of fuse cartridge having a large current rating, than instead of the foot contacts of fuse cartridges have different diameters for each rated current. Example, for the smaller current, the smaller diameter of foot contact, as there is also separate fitting screw for each type of cartridge. Smaller current means smaller diameter of foot contact, separate fitting screw for each type of cartridge. Next, fuse construction of cartridge fuses. The ceramic body of cartridge with its foot and head contact in that metallic caps. The two contacts are linked by a fuse wire which is embedded in sand. तो यहाँ पे जो दो कॉन्टैक्ट है अक्रॉस दैट क्या किया है? फ्यूज वायर और फ्यूज एलिमेंट विल बी कनेक्टेड embedded in a sand. Each cartridge has a break indicator which will be ejected from the cartridge if the fuse wire burn out. तो वहाँ पे एक इंडिकेटर है, फ्यूज वायर बर्न होने के बाद इंडिकेटर विल बी इंडिकेट. फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूज कार्ट्रिजेस and the corresponding fitting screw, they are marked with various colors. Next, fuse. The part of cartridge fuses are: first, head contact, brake indicator, fuse wire, sand filling, ceramic fuse body, foot contact. So these are the part of cartridge fuses. Next, fuse color code for a cartridge fuse: pink for 2 ampere, brown 4 ampere, green 6 ampere, red 10 ampere, gray 16 ampere. For the indication purpose, that color is given for the various specifications of current rating ampere. Means pink 2 ampere, brown 4 ampere, green 6 ampere, red 10 ampere, gray 16 ampere, blue 20 ampere, yellow 25 ampere, black 35 ampere, white 50 ampere, and copper is 63 ampere. Fuse diced type fuses are also available in two type, that is quick response, delayed action type. The quick response type fuses used for heating circuits in normal loads, whereas the delayed action type used for motor circuit and highly इंडक्टिव सर्किट. मीन्स कंटिन्यूस हीटिंग, जैसे कि हमारा टोस्टर है या फिर अवन है, इलेक्ट्रिक अवन, कंटिन्यूस हीट विल बी इन दैट. सो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? क्विक रिस्पॉन्स टाइप फ्यूजेस आर टू बी यूज. एंड डिलेड एक्शन टाइप फ्यूजेस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड हाईली इंडक्टिव सर्किट्स. नेक्स्ट, यहाँ पे टाइप ऑफ फ्यूज दिखाए. ओके. नेक्स्ट, फ्यूज हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस. They are cylindrical shape and are made up of ceramic body filled in with a chemically treated filling powder or silica to quench the arc quickly without any fire hazard. जो फ्यूज़ वायर मेल्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है? स्पार्क होता है. तो स्पार्क को हमें क्या करना है? क्वेंच करना है या फिर एक्सटिंग्विश करना है. तो सिलिका हमने यहाँ पे यूज़ किया है. सिलिका टू क्वेंच द आर्किंग क्विकली विदाउट एनी फायर हैज़र्ड. Normally, a silver alloy is used
as the fusing element, and when it melts due to excessive current, it combines with surrounded sand, powder, and forms of small globes without making an arc, spark or gas. नॉर्मली हम यहाँ पे सिल्वर अलॉय भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूजिंग एलिमेंट, एंड व्हेन इट मेल्ट्स ड्यू टू एक्सेसिव करंट, जब फ्यूज एलिमेंट मेल्ट होता है ड्यू टू एक्सेसिव करंट, इट कंबाइंस विद द सराउंडेड सैंड, पाउडर एंड फॉर्म्स ऑफ स्मॉल ग्लोबल्स without making an arc, spark, or gases. HRC fuses can open a short circuit with the 0.0013 second, means high rupturing capacity fuses having a quick response. It will opens the circuit when short circuit fault is exist and disconnect the supply, or fuse element will be melt in 0.013 second, means that fractions of second of time fuse will be quickly operated. Fuse, see that HRC type of fuses are like this. Okay, thanks.